Okay, Mansoor Ali again, lecturer of mathematics, Ahmed Public Degree College, Malay Kent. Today's presentation is all about the concept of the derivative, means the first principle method, and exercise 2.1. Okay, we are going to start chapter number 2. The name of chapter number 2 is differentiation. Okay, first of all, I just presenting image because it should be something that you can see the funny side of the mathematics. Who discovered the calculus? Actually, differentiation is it's always come from the calculus. Okay, so who discovered calculus first? Newton. Although that it does not look like Newton, but you can see that who can discover the calculus first is Newton, and who published the theory of calculus first, that is Leibniz. Okay, these two mathematicians, two great mathematicians that was in the history. So this is the history of the calculus, because differentiation is all about in the calculus. Okay, because today I'm going to give the lecture of exercise 2.1. So for the exercise 2.1 we have to read the definition of derivative. What is definition of derivative? The derivative of f of x means function of x. The derivative of f of x with respect to x is the function f dash x, and it is defined as, how you define it? In fact, you have seen in the exercise 1.2 question number 2 that we use the formula. So f prime x or f dash x, how we can limit h tends to 0, h is approach to 0, and minus of x upon x. This is the formula of the derivative by the definition. Okay. Formally, I'm just going to start exercise 2.1 from your textbook. And exercise 2.1, first question is, find the definition, the derivative with respect to x, means find the derivative by the definition with respect to x of the following function. And there are 14 questions, 14 parts in question number 1. Okay, so this is the whole story of the question number 1, and I'll do almost all parts, but if we have the same questions, so there will be the home assignment. Okay, so question number 1 is y is equal to 2x square plus 1. Okay, so what is this thing? This is called delta. Okay, means something change in y. So y is equal to 2x square plus 1. So by the definition that, अब हम क्या करेंगे y में del y जमा करेंगे, x में del x जमा करेंगे. आई रिपीट, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने उर्दू में भी इस वजह से बोला क्योंकि हम बार बार यही करेंगे. In y we add del y, in x we add del x. I again repeat, in y we add del y, and in x we add del x. Okay, so this is the function, this is the question number 1, y is equal to 2x square plus 1. So in y we add del y, and in x we add del x plus 1. Okay, fine. So this is a story of y, and this is y plus del y. Okay, so now you can see that I'm just subtracting from this equation by this equation. Okay, this equation by this equation means equation 2 minus equation number 1. So y से y cancel हो जाएगा, only del y is remaining, and 2 is same because equation 2 minus equation 1, 2 is same. A plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square plus 1 minus, because equation 2 minus equation 1 minus this equation, so minus 2x square minus 1. Okay, so again 2 is multiplying by this bracket, so 2x square plus 4x del x plus
2 del x square, and we can cancel +1 by the -1, so -2x square is remaining. And you can see that -2x square plus 2x square is also cancelled, we can cancel out, so only these two terms are available. And you can see that del x is common. I am taking del x common. Why? Because हमें del y upon del x बनाना है. We want to make del y upon del x, क्योंकि when we applying limit del y upon del x, it will convert it to dy by dx, that is the desired result. So del y upon del x is equal to 4x plus 2 del x. This is the thing, because dividing by del x. Why? Because del x is multiplying by this, so it should be divided by there. So देखो del y upon del x बन गया. Okay, now I am applying limit when del x tends to 0. So del y upon del x, limit del x tends to 0. So now look at this thing, so it will convert it to the by the formula dy upon dx. Okay, so 4x is same, because del x is, there is no del x in first term, and in second term there is a del x, so 2 multiplied by 0, because limit del x tends to 0, so 2 0 is 0, so 4x is the answer of this whole function by the definition, or you can say by the first principle method, Now part 2, this is another question. Y is equal to 2 minus del x. Okay, again I'm saying that in y we should add del y, and in x we should add del x. Shabash. Okay, this is equation number, same story that is from the part 1. So this is equation number 1, this is equation number 2. I'm subtracting equation 2 minus equation 1, so only del y is remaining, because y minus y should be cancelled out. This thing means equation 2 minus del x plus del x, minus 2 minus plus del x. Understand? Okay, now you can see that plus 2 and minus 2, it can be cancelled out. Okay, it can be cancelled out. So del x is equal to x raised to the power 1 upon 2 minus x plus del x plus del x raised to the power 1 upon 2. Fine. So now you can see that x raised to the power half is same, because I want to take the common x to the power half, so I'm just taking common forcefully, because there is no x raised to the power half. So how I can do it, that x, I'm just taking common x. Okay, x is taken common. If I take x common, अगर मैं x common लेता हूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा. चैप्टर नंबर हम लोगों ने पढ़ा है ना, बाइनोमियल थ्योरम वाला फर्स्ट ईयर में, 1 बचेगा. ज़बरदस्ती हम इसमें फोर्सफुली कॉमन ले रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो. ठीक है, सो यहाँ पे तो x नहीं है, सो x इसके नीचे आ जाएगा. सो 1 प्लस del x अपॉन x, लाइक दिस. ओके, एंड द होल पावर इज इन द ब्रैकेट, सो x की पावर भी हाफ हो जाएगी, and this whole bracket power half is as well. Okay, now you can see this is same applying the binomial theorem. A plus b की power n, 1 a की power n मतलब 1 की power n plus 1 upon 2 a की power n minus 1 b की power 1. ठीक है, and 1 upon 2 minus 1 means n minus 1 upon 2 factorial, and because this is 1, so we cannot write any power, so b square and so on. Okay, now in next term x raised to the power half minus x raised to the power half. Okay, so now look at this, that x raised to the power half del x upon 2x, del x upon 2x. Okay, and if I'm just multiplying here, so 1 upon 2 minus 1 upon 2, so this is the same thing. Now we can cancel this thing by this thing. Okay, so what is remaining, this whole term is remaining. So del x, it should be divided by there, ये वहाँ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा del y upon del x. So सिर्फ क्या बच गया, minus x की power half, and this is the same thing. Okay,
जैसे ही del y अपॉन del x बनेगा अप्लाइंग द लिमिट, ठीक है, तो टेकिंग लिमिट एज del y अपॉन del x dy अपॉन dx हो जाएगा माइनस एक्स की पावर हाफ लिमिट del x टेंस टू 0 एंड द सेम स्टोरी del x की जगह पे 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. सो 1 अपॉन 2x माइनस एक्स की पावर हाफ इज रिमेनिंग. x की पावर शिफ्ट आई एम जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, माइनस 1 हो जाएगी. 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज माइनस हाफ. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to 2 minus under root x minus half x raised to the power minus half और minus 1 upon 2 under root x. both the thing is y. okay, अभी थोड़ा सा आपको अगर लग रहा होगा डिफिकल्टी क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगा है यहाँ पे, लेकिन अभी हम इसकी और बहुत प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, सो डोंट वरी. नाउ पार्ट 3, you can see that part 3 again under root case, so try to do yourself, okay, as part 2. okay, now you can see part 4, y is equal to 1 upon x cube. so I'm just converting y is equal to x raised to the power minus 3. again y में del y जमा कर दिया, x में del x जमा कर दिया. equation 2 minus equation number 1, del y is remaining, this minus this, ठीक है. now x is common, again x common आ गया, del x upon x minus 1. why? because x raised to the power minus 3 I took the common. okay, fine. so common मतलब एक स्टेप बन बचा है कि x कॉमन लिया है, 1 plus del x upon x minus 3 and minus x की पावर minus 3. so I'm just taking common these two terms. okay, this is same. now again binomial theorem, as I said earlier कि binomial theorem बहुत लगाएंगे. again binomial theorem, 1 plus x की पावर n, 1 plus x की पावर n क्या होता है, 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square plus so on. देख 1 plus nx, अब ये माइनस कहाँ से आया, n यहाँ पे देख सकते हैं आप, n के बाद साथ क्या है माइनस 3, सो माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस nx plus n minus 1 n minus 1 upon 2 factorial and this is del x upon x means b square plus and so on, and minus 1 is same. okay, now this is same, plus 1 minus 1 can be cancelled. okay, so minus 3 del x upon x and minus 3 minus 1 minus 4, so minus 3 minus 4 upon 2 del x upon x. I'm just taking common del x here. देखो फिर वही काम, क्योंकि मुझे del x को उस तरफ भेजना है ताकि del y अपॉन del x बन जाए, तो लिमिट में लगा दूं. so I'm taking del x common, del x upon x, del x upon x I'm just taking common because del x upon x in the first term and second term as well. so del x upon x बच गया, so minus 3 and 2 1s are 2 2s are, so minus 6 and minus 1 is plus, sorry, plus 6, and del x upon x is only one power is remaining because I took the power, 1 power from outside the bracket. now this del x should be divided from the this thing, so del y upon del x बन जाएगा, ये del y upon del x, x की पावर माइनस 3 x की पावर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 x की पावर माइनस 4 हो जाएगी, ये आ गई, ये सेम आ गया. जैसे ही ये बनेगा अगेन ऐसे क्या करेंगे, शाबाश, लिमिट अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसमें, और del x अपॉन x की जगह पे क्या आ जाएगा 0. so minus 3 x की पावर minus 4 और 3 upon minus 3 upon x की पावर 4 is the answer of part 4. okay, again part 5, let y is equal to 1 upon x minus a. this is the question, x minus a raised to the power minus 1. okay, y में del y जमा कर दिया, x में del x जमा कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बस बाइनोमियल थ्योरम है, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा फंस रहे होगे, लेकिन बार बार मैं करूँगा, बार बार करूँगा ताकि क्लियर हो. So equation 2 minus equation 1, equation 2 minus equation 1, this is x minus a plus del x raised to the power minus 1 minus x minus a raised to the power minus a. okay, because this is the thing, x minus a. okay, equation 2 minus equation 1, equation 2 minus equation 1. okay, now x minus a raised to the power minus 1 I'm just taking common. okay, so 1 plus del x upon x minus a is remaining. so you can see x minus a मैंने कॉमन लिया है यहाँ से, so del x upon x minus a आ गया.
-1 और ये जो पावर ये दोनों में से कॉमन ले लिया, सो ये बाहर आ गया, यहाँ से -1 बचेगा। एंड नाउ व्हाट कैन आई डू हियर, व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n n minus 1 upon 2 factorial x square plus n n minus 1 upon 3 factorial x cube and so on. Okay, so 1 again binomial theorem applying किया, 1 माइनस माइनस क्यों आया, बिकॉज n में हमारे पास माइनस था, सो प्लस माइनस माइनस, ओके 1 प्लस 1 प्लस और प्लस माइनस माइनस एन एक्स, दिस इज x and n means 1 times this is this, n minus 1 upon 2 factorial by the formula n x square. Okay, n minus 1 is same, again the whole story, simplify simplify simplify, same thing, जैसे ही ये del x आएगा del x को हम डिवाइड करा देंगे ताकि del y अपॉन del x क्या बन जाए, dy अपॉन dx बन जाए। ठीक है, इसको मुझे सिंप्लीफाई किया and you can see the answer. Okay, so this is another part, y is equal to x bracket x minus 3. So if I multiply x with this bracket, so x square minus 3x, so please try to do yourself. Okay, now this is y, फिर क्या करोगे आप लोग, del y करोगे, y में del y जमा करोगे, x में del x जमा करोगे, and this is the home assignment, you can do it. Okay, and the 7th part is also a home assignment. Why? Because 2 upon x raised to the power minus 4, again क्या करेंगे, y में del y जमा करेंगे, x में del x जमा करेंगे, and you can do it. Okay, now part 8 I am doing for you. Let y is equal to this is the question, part 8, y में del y जमा करेंगे, x में del x जमा करेंगे। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन इसमें भी ऐसे ही करना है आप लोगों ने, दोनों में बिल्कुल सेम, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 की तरह बिल्कुल सेम करना है। ओके, एंड प्लीज सबमिट द असाइनमेंट। ओके, सो y इज इक्वल टू दिस थिंग, y प्लस del y दिस थिंग। ओके, बिकॉज y में del y जमा कर दिया, x में del x जमा कर दिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो ओनली del y इज रिमेनिंग। इक्वेशन 2 मीन्स दिस माइनस दिस माइनस दिस इज द थिंग। ओके, अगेन x प्लस 4 आई एम टेकिंग कॉमन 1 अपॉन 3 के साथ, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 प्लस del x अपॉन x प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1। अगेन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, del x बचेगा, del x को डिवाइड कर देंगे उस तरफ, जैसे ही उस तरफ जाएगा लिमिट अप्लाई कर देंगे, एंड द आंसर इज द होल। देखो सेम स्टोरी, the same story is going on because we are doing first principle method, and we are taking the derivative by the first principle method. This is in the Karachi board as well, federal board as well, KPK board as well. The basic thing of the derivative is by the first principle method. Okay, but from exercise 2.3 we can take the derivative by the formulas, वो हम करेंगे बाद में करेंगे, बट ये पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। हर सवाल देखो सेम कॉन्सेप्ट, बाय द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन डू। आई होप यू आर लर्निंग दैट हाउ वी कैन डू द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ओके, नाउ 9th पार्ट, द पावर इज 3 upon 2। ओके, आई एम जस्ट एडिंग अगेन द रिपीटिशन, एडिंग y प्लस del y में del y जमा कर दिया, x में del x जमा कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इज द थिंग, x is common, x raised to the power 3 upon 2, so 1 plus del x upon x raised to the power 3 upon 2 minus 1, binomial theorem, this del x divide, same story, you can see same story. I hope आपको समझ में आ रहा होगा, but if you have any query, any problem, I am here to solve every problem for mathematics, regarding mathematics, live lectures, लाइव व्हाट्सएप पे मैं हूँगा। आप मुझसे पूछो कि सर पार्ट 9 के 3rd स्टेप में क्या हुआ है, प्लीज़ सर पार्ट 9 के 2nd स्टेप में क्या हुआ है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, नाउ पार्ट 9 y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू द पावर 3 upon 2 मीन्स पावर है, वो भी फ्रैक्शन में, और सेम क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग द होमवर्क। पार्ट 10 y इज इक्वल टू x रेज़्ड टू द पावर 5 upon 2, यहाँ पे क्या था 3 upon 2, यहाँ पे क्या था 5 upon 2। If I do 3 upon 2 for you,
you can do 5/2 for me, tit for tat. 3/2 मैंने किया आपके लिए, 5/2 करो मेरे लिए. मेरे लिए तो खैर मैंने गलत बोल दिया, 5/2 करोगे आप अपने लिए ही. ठीक है, do yourself for yourself, because you know there is only one way to learn maths, to do maths. maths करोगे maths आएगी. now part 11. देखो बहुत डिटेल में ये लेक्चर किया है 2.1 का, ज़रूर इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो है ना वो प्रैक्टिस करिएगा. नाउ वेरिएबल पावर, बिकॉज x रेज़ टू द पावर m and I'm just doing for you x raised to the power m, so it means that I'm just adding y to del y and x to del x. Again the same thing, equation 1, equation 2, equation 2 minus equation 1 del y, and this is the thing. So again x raised to the power m, I'm just taking common here. Binomial theorem, plus 1 minus 1 can be cancelled. Now del x should be common here. Okay, now look at this. x is in the denominator in first term, and 2x means x raised to the power 2 is in the denominator. So can I take the common x from the denominator? Means x की पावर -1 कॉमन ले ली मैंने, उसको ऊपर भेज दिया तो x की पावर बेसिस सेम पावर है m-1. ओके, ठीक हो गया. तो del y अपॉन del x क्यों बना हुआ? क्योंकि अपने del x हमने कॉमन लिया हुआ है, del x कॉमन लेके हमने वहाँ फेंक दिया. जैसे ही बन गया वो आपने क्या कर दिया, लिमिट लगा देनी. So del y upon del x, it can be changed dy upon dx, and x raised to the power m-1, m is same. So this is the answer of this question. Now the same question I'm just giving the homework like this: y is equal to x raised to the power minus m. Do yourself as well, just change the m by minus m, the above equation. You can do it. Okay. Now part 13, x raised to the power 40. ठीक है, वही I'm just adding y to del y, x with del x, equation 2 minus equation 1. ठीक है. Now this is the thing that the binomial theorem I have to apply in this scenario: a plus b whole power n. Okay. So nc0, nc1, nc2 and so on. Okay. So nc0 means 40c0, a की पावर 40 means a की पावर n, plus nc1 40c1, a की पावर n minus 1, x की पावर 39, b की पावर 1 del x, plus nc2 a raised to the power n minus 2, so 38, b raised to the power 2, and so on, and it will reach to 40c40 means nc n तक पहुंचता है. ठीक है. 40c0, any number c0 is always equal to 1. So 1x raised to the power 40, 40c1, any number it will be 40 as well. Okay. So 40c0, this is the same thing, and x minus 40 is. So x raised to the power 40, I can cancel this by this. Okay. Now you can take the common del x in the whole equation. जैसे ही del x कॉमन लेंगे हम क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे. del y अपॉन del x बन गया del y अपॉन del x. अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देंगे. तो जहाँ जहाँ del x होगा ये 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ क्या बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी 40c1. ठीक है. सो द आंसर इज 40c1 इज, आई सेड इट दैट 40c1 इज 40 एंड x इज टू पावर 39. x raised to the power 40 मैंने किया है, x raised to the power minus 100, do yourself. Okay. Now question number 2, find dy upon dx from the first principle. This is the same thing that we did it in question number 1 9 part, so do yourself, and in part 2 as well. Okay. So I'm just giving home assignment 1. This is the home assignment 1 of chapter number 2. Chapter number 2 का पहला assignment है, exercise from 2.1. In question number 1 you have to do part 3, part 6, part 7, part 14, and in question number 2 part 1, part 2 for first principle method, by the first principle method. ठीक है. If you have any question, I am alive through WhatsApp group, so you can ask me any question in your math period regarding this presentation, and I hope you learn something.
Thank you for your attention. I'm live through WhatsApp. You can please ask me if you have any problem in any step of any question in this presentation. Regarding this presentation means exercise 2.1, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.